Hi, good morning, and welcome everyone to this live market analysis brought to you by Upstox. And my name is Amit Goel, and I'm a CMT and a SEBI registered research analyst. And I welcome all of you to this live market session. What are we going to do in this session? हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हर दिन सुबह 8:45 से 9:45 एक घंटे के लिए हम लोग आएंगे एंड हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल मार्केट की हलचल, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव किस तरह से हैं, एंड गिफ्ट निफ्टी का क्या ओपनिंग होने वाला है, एंड अगर हमारे मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में भी एक नज़र डालेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चार्ट्स क्या बता रहे हैं, किस तरह का सेटअप दिख रहा है बाजार का, क्या ट्रेंड है बाजार का, एंड एज ट्रेडर्स हम लोगों को किस तरह के सेटअप्स के बारे में समझना चाहिए, किस तरह के सेटअप्स हमको ढूंढना चाहिए। और जैसे मार्केट चालू होता है हम लोग कुछ डेटा पॉइंट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, जिसके थ्रू हम लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड सेटअप्स किस तरह से ढूंढ सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। सो ये दिस इज एन अटेम्प्ट टू learn about technical analysis and read and how to read the market. Are we going to be sharing trade tips or trading recommendations? The answer is no. We are not in the process of we are not in the that is not the objective of this session. What we essentially want to do is कि बाजार को किस तरह से रीड करें, टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह से यूज करें, हाउ डू वी रीड अबाउट द चार्ट्स एंड एंड अदर डेटा पॉइंट्स। एज अ ट्रेडर हम लोगों को क्या डेटा पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है उसके बारे में हम रेगुलरली सीखेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट let us understand what has happened in the global markets or the US markets primarily. If you look at the US markets last evening, the movement in US was positive. We have seen about 0.5% move on the upside in the US markets, and the trend very clearly is up. Let me share the screen for everybody's benefit. All right, I hope you're all able to see the screen. All right, so as I was saying, we are on the TradingView platform and we are looking at the international markets. US market last evening closed with a uptick of 0.5%. Nasdaq also was sharply up by nearly 1%, whereas the Russell, which is the mid cap index in the US, after a formation of a shooting star and a bearish follow through, it is trying to consolidate at higher levels and trying to move up. So the trend in the US market, in the US equity market, is very, very clearly on the upside with no weakness anywhere around. We can also look at whether the markets are overextended or not. So S&P 500, if you look at the broader market index, it is not overextended and is comfortable at around 58 levels of RSI, and the bands on the Bollinger Bands also look fairly comfortable. So the first inference is the US markets are uptrending and are in a comfortable position with no overbought signals yet. Let us also look at the Asian markets जो आज सुबह खुले हैं, ठीक है? We have a similar kind of an outlook on Nikkei, though it is down by 0.5% in the morning, since morning, but it is still comfortable in terms of the technical parameters, and the trend very clearly remains up. The interesting market is if you look at the Hong Kong market. Hong Kong market has been, giving a lot of strength, is showing a lot of strength, and has kind of given a breakout from this
डब्ल्यू फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर एक 27,000 लेवल्स के ऊपर से हांगकांग मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है आज, एंड काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो अगर हम लोग ये ग्लोबल मार्केट्स क्यों देखते हैं, क्विकली एक 2-3 मिनट में हम लोग ग्लोबल मार्केट्स इसके लिए देखते हैं ताकि हम लोगों को एक ब्रॉड ग्लोबल सिनेरियो का एक एक आइडिया लगे कि भाई अगर ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस है तो बट नेचुरली इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी। ठीक है, बिकॉज वी ऑल्सो आर हाईली कोरिलेटेड टू द ग्लोबल मार्केट्स। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस नहीं दिख रही है एंड काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो थोड़ा हमको भी ये लगता है कि इंडियन मार्केट्स में भी इस तरह का कुछ ट्रेंड हो सकता है। सो वी आर जस्ट हैविंग अ cursory glance on the global markets rather than forming any strong view. Now, if you look at the Korean markets after this consolidation level, यहाँ पर देखो ऑल चार्ट्स आर एसेंशियली अ टेक्निकल रीड। ठीक है, एक यहाँ पर कोरियन मार्केट्स में अगर आप देखें, इस तरह का एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था, प्रायर ट्रेंड वाज अप, एंड जैसे उसने वो ट्रायंगल फॉर्मेशन को 29 दिसंबर को ब्रेकआउट किया, इट हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन अप। इट हैज विटनेस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन अप फ्रॉम द ब्रेकआउट। एंड अगर आप देखें फ्रॉम एंड ऑफ दिसंबर, मतलब जनवरी मंथ में, करीब एक महीने में, एग्जैक्टली इन 1 मंथ, इट इज अप बाय नियरली 23%. So, this is the kind of outperformance that the Korean market is witnessing. Why this is important for us to understand is, why this is important for us to be aware of, कि आप रोज देख रहे हो कि FIIs जो है एवरी डे दे आर सेलिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। अगर वो पैसा खरीद रहे हैं, मतलब अगर वो स्टॉक्स बेच रहे हैं इंडियन मार्केट्स में एंड पैसा खड़ा कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं यहाँ से, तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए है। वो पैसा कहीं ना कोई मार्केट में तो डालेंगे। तो वी कैन हैव अ कर्सरी ग्लांस ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स टू अंडरस्टैंड कि मोमेंटम कहाँ पर है। तो वेरी क्लियरली हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोरियन मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। आर द कोरियन मार्केट्स नाउ ओवर एक्सटेंडेड? डेफिनेटली यस। कोरियन मार्केट्स काफी स्ट्रांगली ओवर एक्सटेंडेड हैं, बट इसका ये फीचर रहा है, अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो क्या ये कंटिन्यू कर सकता है इस तरह का एक ओवर एक्सटेंशन? पॉसिबल। बट अभी अगर आप देखें तो बॉलिंजर के अपर बैंड पे है, तो शायद थोड़ा बहुत कूल ऑफ भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाउएवर द ट्रेंड वेरी क्लियरली रिमेन्स अप। तो मैं इस तरह के जो मार्किंग्स कर रहा हूं, इनको यहीं पर रख दूंगा ताकि हम लोग इसको कल जब देखेंगे तो हम लोगों को इसके बारे में ध्यान रहेगा। ओके, this is the Chinese market. Even the Chinese market has been, in a very strong trajectory. दो एक कंसोलिडेशन फेज में है यहाँ पर। अब वो कंसोलिडेशन फेज से, कंसिडरिंग दैट देयर इज अ अप ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड इज अप, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, एंड इवेंचुअली इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गो अप। इस तरह का बहुत क्लियर साइन दिख रहा है। यहाँ पर ओवर एक्सटेंशन था, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट था, थोड़ा सा कूल ऑफ आया, एंड अब वो कंसोलिडेशन फेज में है, एंड कंसोलिडेशन फेज होने के बाद यू विल एक्सपेक्ट दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू। Now, let us look at the metals, precious metals. These are the two asset classes which are defying gravity, gold as well as silver. पहले तो सिल्वर काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स दे रहा था, but now even gold has gained momentum and is giving very strong momentum, right? Gold is up again another 3% today. This is the international gold prices, as well as silver भी आज प्रायर 2 दिन के पहले का जो टॉप किया था $115, उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, एंड द ट्रेंड डज नॉट लुक लाइक गिविंग अप. Momentum is extremely strong in these two asset classes. इसमें there are a lot of theories which go around that there is a shortage of there is a lot of demand for industrial demand काफी है for silver, and there is a shortage of supply. चाइना भी कुछ constraints कर रखा है, supply नहीं खोल रहा है. There are a lot of discussions around that. However, the fact of the matter is प्राइस एक्शन देखें तो एवरी डे इट इज पंचिंग अ न्यू हाई, एवरी डे इट इज ट्राइंग टू मूव अप एंड ओनली अप.
as traders, okay, as pure price action traders, how do you trade this kind of a momentum? It is very, very difficult. Let's be honest. I'll be honest that in this kind of a parabolic move, इस तरह का एक वन साइडेड मूव बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए. ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप सिल्वर में भी देखें तो ये जो ब्रेकआउट आया था पोस्ट एंड ऑफ नवंबर, इफ यू लुक एट दिस small formation of a cup and handle, यहाँ का जो ये breakout आया था, from this breakout, if I were to measure silver, it is nearly up by 115%, which is a crazy move in 2 months. December and January में 115%, 114% का absolute move आया है in silver. Now, with this kind of a move, as a trader, can you enter? Suppose you have not taken a position. It is going to be very, very difficult to enter a product like this, enter an asset class which is showing this kind of a momentum. Now, how will you enter this? The way you can enter this kind of a parabolic move product is this. Suppose after a parabolic move, मतलब a straight line, greater than 45 degrees का अगर move आता है, and then the market kind of bases. Once you find this kind of a base, okay, it is when you give a breakout of this base, you enter, okay, and you keep this base bottom as SL, okay, and your targets will be 2:1 of SL. So numerically अगर मैं बोलूं, let's say यहाँ पे 100 पे ब्रेकआउट आया, let's say 95 पे SL है, ओके, एंट्री किया आपने, तो अगर 5 रुपीज का आपका SL है तो आपका 10 रुपीज का टारगेट होगा. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर सेटअप. बट अगर आप सिल्वर में देखें क्या इस तरह का सेटअप मिला था, यू कुड से यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंसोलिडेट किया एंड देन ब्रेकआउट आया. जब ये ब्रेकआउट आ रहा था यहां पर, at this candle you could have entered maybe at the fag end of the candle and kept this as your stop loss. ठीक है, and इसका 2:1 would be your target. This is how you would enter any technical chart when you see very strong momentum. Okay, once you achieve this, आप 50% book करो profit. Okay, 50% quantity book करिए and remaining 50% bring to cost. Now this is how a technical entry can be done in a product, in a strong momentum if of any chart. ठीक है, it could be any chart. अगर यहाँ पर भी आप देखें, this was a consolidation phase, and then you get a breakout, right? breakout पे entry करोगे, consolidation phase का stop loss रखोगे, and 2:1 का initial target for 50% quantity. Remaining 50% you would have brought the SL to cost and let it rip. तो आपको ये पूरी रैली कैप्चर करने का मौका लगता. All right, then how would you do a TSL? आपका TSL होता कि भाई if you have entered here, you have kept a stop loss here, right? Then you see a fresh consolidation here. आप remaining 50% का TSL यहाँ पे लगाते हैं. You move the SL up. Clear? This is how one could, trade a technical chart when there is a very strong momentum in place. Okay. All right. Now we have seen gold, silver, international markets, and अब 9 बज गए हैं. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने मार्केट्स में जाके देखते हैं कि प्री ओपन मार्केट्स किस तरह से हो रहा है. So pre open market, it is too early. It is showing about 100, 105 points, 84 points. It's all over the place. So let us wait for the pre-open market trades to settle to understand which are the movers and shakers. Now I'll just look at some of the questions and
फिक्सर टाइम चेंज करें 8 to 9 आ सके. Okay, so request is noted. There is a request that we start the session at 8 o'clock. Let us see whether we can incorporate that request. All right, so we will wait for the markets to settle and understand what kind of price action is happening in the indices, in the stocks, and then we will read through that. ना. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू, मतलब एक छोटा सा एक्सरसाइज मेरे को करना है, जो मैं एक गूगल शीट तैयार कर रहा हूँ. ठीक है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, एफ आई आई और डी आई आई डेटा. तो एफ आई आई और डी आई आई डेटा को हम वैसे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आता है. करेक्ट. वी ऑलरेडी हैव दिस एफ आई आई एंड डी आई आई डेटा for the cash market. However, I would want to, kind of start making a note of this. ठीक है, इससे क्या होएगा, ये प्रैक्टिस हम लोग करके देखते हैं. लेट अस ट्राई दिस फॉर अ मंथ. Are we able to recall the numbers? Are we able to sensitize ourselves? मतलब हमको क्या ये याद रहेगा कि भाई कितने हजार करोड़ का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है बाय एफ आई एंड डी आई. हमको इतना मालूम है कि भाई हाँ, एफ आई जो है कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, डी आई जो है कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को. बट अगर हम ये नंबर, एक सिंपल नंबर है एफ आई और डी आई का डेटा जो पब्लिश होता है, उसको हमको कहीं पर एक नोट करना है, ताकि हमको जब हम इसको लिखते हैं तो हमको ये हमारे मेमोरी में, मसल मेमोरी में बिल्डअप हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज दी ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग दिस एक्सरसाइज. तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बना रखी है गूगल शीट पे, एंड यहाँ पर मैं एफ आई और डी आई डेटा को सिर्फ नोट करना चाहूंगा. ओके, तो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन किस दिन था? Friday was the last trading session. Saturday, Sunday, Monday were holidays. Then we started on 27th. तो 23rd के बाद 27th तो हम लोग को डेटा लिखना है. क्या डेटा था? सो दिस इज द लास्ट डेटा. विल जस्ट मेक अ नोट, क्योंकि यहाँ पे चार्ट आता है. ठीक है, हमको नंबर ही याद नहीं रहता है कि भाई हुआ क्या. तो लेट अस जस्ट मेक अ सिंपल नोट. एफ आई सोल्ड 3068 crores. 3068. और DII ने बाय किया 8999 crores. 8999 crores. And the markets closed at 25,175. Right? बस इतना ही. Just these three numbers. FII डेटा, DII कैश, और सिर्फ कैश का डेटा. फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स नहीं लिखने हैं. हमको सिर्फ ये लिखना है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा. दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डेटा. ये जो एफ का ट्रेंड है, अगर हम लोग नोट करते जाएंगे, वी विल स्टार्ट रिमेंबरिंग कि हाँ, एफ का ट्रेंड क्या है. बिकॉज वी हैव टू कोरिलेट थिंग्स नाउ. ग्लोबल मार्केट्स में तेजी है, इंडियन मार्केट में उतनी तेजी नहीं है. ठीक है, एंड एफ का जो पैसा है वो मार्केट से बाहर निकल के कहीं ना कहीं और लगाया जा रहा है. तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में कंसोलिडेशन फेज चालू हो रहा है, एंड इंडियन मार्केट्स में कंसोलिडेशन फेज पहले से है, कंप्रेशन पहले से है, एंड एफ डेटा का अगर नंबर्स कम होता जाता है, सेलिंग का, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, तो दैट कुड बी एन अर्ली इंडिकेटर फॉर अस कि द मार्केट इज प्राइमिंग फॉर अ अप मूव. ठीक है, so just to understand what is the kind of trend that the market is trying to give us, what is the kind of signal this important data point is trying to give us, we will try and develop a habit of noting it down. अगर ये regular practice करें, we will see if it is of use to us. If not, we will develop something new. The time frame, see, there are three typical time frames in the market.
ठीक है ना. There are typically three time frames in the market. In my opinion, the three time frames are the three styles of trading are intraday, then you would have swing, then you would have positional. As the name itself says, intraday is day trade, right? Here it is few days to weeks. Okay, here it is few weeks to months. All right. In the intraday time frame, your time frame on which you are going to be executing are going to be 5 minutes, 15 minutes, or maybe at best 30 minutes. I would actually not even say 30 minutes. 5 and 15 are good enough. ठीक है. स्विंग ट्रेडिंग के लिए hourly or the 75-minute time frame is ideal. It is ideal. ठीक है. स्विंग पोजीशन इसके लिए यहां पर डेली और इवन वीकली इज गुड. ठीक है. यहां पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई आवरली में कर सकते हैं या आवरली एंड 75 इज द सेम. यू कैन इवन लुक एट कंसिडर डेली एज वेल. ठीक है. कई बारी डेली चार्ट पे भी आपको स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं. So, just, have a mental note of it, or, you can even note it down somewhere. But this is the kind of setup that you would work. You, as a trader, you need to understand ki, bhai, what time frame is suitable to me. Am I an intraday trader? Do I have enough time intraday to scan for stocks? Am I comfortable holding positions overnight? ठीक है. ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दैट यू हैव टू आंसर योरसेल्फ. करेक्ट. मैं आपके लिए वो आंसर नहीं क्रिएट कर सकता. बट आप अगर समझते हैं कि भाई मैं इंट्राडे में खुश हूं, सुबह चालू किया ट्रेडिंग, दोपहर तक क्लोज कर दिया, ओवरनाइट मार्केट में क्या हो रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं है, तो इंट्राडे आपके लिए सूटेबल है. अगर आप फुल टाइम ये कर रहे हो, ठीक है, या आपके पास उतना टाइम है इंट्राडे में करने के लिए, तो आप इंट्राडे स्टाइल यूज कर सकते हो जिसमें वीवैप, ओपनिंग रेंज, रिट्रेसमेंट, कई सारे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए. ओपन हाई, ओपन लो, इस तरह के कुछ स्ट्रैटेजीज हैं. स्विंग ट्रेडिंग में कई बार क्या होता है, वीकेंड ट्रेडर होते हैं जो मतलब डेली मार्केट को एनालाइज शाम को एक आध घंटा कर सकते हैं शायद, और ड्यूरिंग द डे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में बिजी हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग का सहारा ले सकते हैं. आवरली चार्ट्स को स्कैन करिए, 75 मिनट्स के चार्ट को स्कैन करिए, डेली चार्ट्स को स्कैन करें, देखिए अगर उस पर कुछ मिल रहा है. ठीक है. एंड अगर पोजिशनल है वो तो बेस्ट होएगा वीकली चार्ट्स पे स्कैन करें. वीकली चार्ट पे वीकेंड पे ओवर द फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप चार्ट्स को स्कैन करें, देखिए क्या सेटअप्स बन रहे हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला काम करें. ओके. तो अगर आपको ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे मिलता है, उसका स्ट्रेंथ, उसका मूव उतना ही बड़ा होता है एज कंपेयर टू अ इंट्राडे ब्रेकआउट. ठीक है. नाउ the markets have settled, pre-market has settled. Let us understand कहां पर क्या हो रहा है. So these are the F&O stocks. Let's see indices. Let's see Nifty 500. Nifty 500 में are there any? Let's just say Nifty 50 में क्या हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं. मार्केट सेटल हो गया ना. हाँ. तो एक्सिस बैंक कंटिन्यूज विथ इट्स मोमेंटम. रिजल्ट्स अच्छे आए थे एंड कल भी एक्सिस बैंक ऊपर था एंड
आज वो रिजल्ट, कल yesterday the Axis Bank was up by about 4.5%. Even today it is showing a up move of 2.45%. Let us see which other stocks are showing. What is the broad market doing? Let us see broad market क्या कर रहा है. So Nifty is opening up by 83 points and Bank Nifty is opening up by about 0.63%, which is 370 points. ठीक है. So the broad markets अगर आप देखें तो थोड़ा सा अपने को right. So broad markets, if you notice, it is showing a little bit of strength today. However, this is the pre-opening. We will have to wait for let's say 9:30 to understand what is the kind of trend the market wants to give. Now let us go to the Nifty chart on TradingView, where I have done some of the markings which I will be able to share with you. Now, if you notice Nifty, okay, if you notice Nifty, this is a broad support area in which Nifty has taken support. Okay. If you notice from 8th of August, then we had another retest of this support in September, and then again in end of September we had multiple supports. मतलब अगस्त एंड सितंबर के बीच में यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मेशन किया which is called as ट्रिपल बॉटम. ठीक है, 1 2 3. So we created, or the Nifty created, what is known as a triple bottom slope, right? And the slope is up. तो यहाँ पर बनाया and then it gave a breakout out of this shape, out of this entire area. This was a breakout area. Retest, and then it is now in a consolidation phase with a further retest of the lower trend line. Okay. Now this is very crucial. If this breaks, right, then where are we heading? We are going to head to a lower support area. वो support area क्या हो सकता है? ठीक है, on the daily time frame this is a very crucial area. ठीक है, अगर आप देखें तो ये राउंड नंबर भी है 25,000 लेवल्स, एंड उसके ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है. अगर ये ट्रिपल बॉटम का ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी कहां पे जा सकता है? दिस एंटायर एरिया निफ्टी का, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इट्स एन एम्प्टी स्पेस. माने नो सपोर्ट, राइट. देन यू हैव दीज एरियाज ऑफ सपोर्ट, मतलब प्रायर पिवट्स. ये एरिया, ये कौन सा एरिया हो गया? So something in the range of 22,500 levels, 22,800 to 500 levels could be the earliest support area for us. Or if I have to, draw this area, like can I say कि यहाँ पर क्या कोई support हो सकता है? ठीक है, या I would say this looks like more of a gap area. This can be a gap support area, correct? So ये level क्या है? 23,000. We are currently at 25,300. This trend line support is very crucial. If this trend line support is broken, fresh stock shorts can be triggered. But in my opinion, this trend line support should hold. Okay, this should hold
for few reasons. One, there is this trend line support. Support should hold. One, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है. Second and more crucial, okay, is the 200 DMA. And the third one is pole number 25,000, which has strong put OI. So these are the three technical reasons. ओम प्रकाश जी, 22,800 का गैप फिल करेगा क्या? आई कैन नॉट से व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस रीड कर रहे हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो बहुत क्लियरली आपको चार्ट्स पे दिख रहा है. अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आप अगर देखें, एक दो बारी यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट मिला है. ठीक है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ा नहीं है. तो अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट में थोड़ा स्ट्रेंथ है एंड होपफुली ये स्ट्रेंथ बरकरार रह सकता है. ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूटता है तो फिर हम उस गैप लेवल के बारे में चर्चा करेंगे. बट फिलहाल क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओके, देयर कैन बी अ टेक्निकल बाउंस टू द मीन. ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देयर कुड बी अ मीन रिवर्शन सेटअप. ओके, हाँ, यहां पर फोर्थ पॉइंट ये भी था कि ओवर सोल्ड ऑन टेक्निकल parameters. This is the live chart, Rahul Sisodia. All right. So trend line support है, 200 DMA है, whole number है at 25,000, which will naturally have a strong PE support, and it is also oversold. Nifty is oversold on technical parameters, because of which I feel there could be a mean reversion trade up till 25,500. Now, point of interest for me would be 25,500 levels. ठीक है, 25,000 पे सपोर्ट है, 25,500 पे मीन है, मतलब मूविंग एवरेज है, जो फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बिकॉज यू विल ऑल्सो सी दिस प्रायर सपोर्ट लेवल. ये प्रायर रेजिस्टेंस था जो वापस एक सपोर्ट बना, एंड अगेन दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. ओके, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पिवट पॉइंट, बिकॉज यहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की. इट फेस्ड रेजिस्टेंस एट द हायर पिवट लेवल एंड हैज फॉलन डाउन. तो ये सेटअप इज लुकिंग लाइक trading between these two levels of 25,000 and 26,000 on a broad range, and 25,000 and 25,500 on a narrower range. तो यहां से एक टेक्निकल बाउंस की उम्मीद की जा सकती है अप टिल 25,500. वहां पर क्या होगा रिमेन्स टू बी सीन. ठीक है, सो द क्लैरिटी और द विजिबिलिटी is up till 25,500 for a technical bounce. What was the oversold technical parameter that I was explaining to you? The oversold technical parameter was this RSI oversold. ठीक है, एंड बॉलिंजर बैंड में यहां पे बॉलिंजर बैंड रिवर्सल. This was a positive reversal. It was walking down the band, reversal आया at a technical support area,
when the market was oversold. So add all of this, you feel that there could be a mean reversion setup. I have clarity or I have a technical read until this level. Post this, what will happen is going to be a question. Are we clear? So it's going to be very difficult for us to, keep an to guesstimate कि भाई यहाँ के इसके आगे क्या हो सकता है. Okay? Now, this is your Nifty. Let us see Bank Nifty में क्या रुझान है. Now, if you see, Bank Nifty is actually a little stronger as compared to Nifty. However, it is also in a consolidation phase now. इसमें भी काफी सारा consolidation हो रखा है बैंक निफ्टी में, एंड पिछले 4-5 दिन से after hitting a low of 58,000, it is now trying to move up. ठीक है. And if you notice Nifty and Bank Nifty, Nifty's price is trading below the 20 SMA, whereas 20 period moving average, whereas Bank Nifty is trading above the 20 period moving average as of today. ठीक है. तो बैंक निफ्टी में थोड़ा strength है as compared to Nifty. Maybe Nifty will be led by the banking and financial services stocks. Now, let us look at the other developing data points and we will go to our platform. तो यहाँ पर हम जाते हैं and हम लोग देखते हैं open interest buildup. And let us also mark the opening range for Nifty. On a 15-minute time frame. Okay. And एक काम करते हैं Nifty as well as this will be Nifty and a Bank Nifty. Okay. So let us mark the low of the day because this is the 15-minute candle. तो ये फर्स्ट 15 मिनट्स का हमारा लो है एंड मैं इसमें सेटिंग्स में जाके टाइमर भी लगा देता हूँ. Okay, so we have another 5 minutes to understand whether the market is trying to, move up. ठीक है, we will revisit this. In the meantime, we will also look at what is the OI buildup. तो OI change देखते हैं for 3rd February. All right. 3rd February का अगर आप OI change देखें तो क्या लग रहा है आपको? What is strong? Which is the stronger one? Are we writing more of calls? Are we writing more of puts? Okay. At the current market price, we are writing more of puts at 25,300 level, which is the spot. And overall, if you see, there is more of call writing. However, around the current market price, around the ATM, you can see a lot of put writing. Okay. So 25,300 पे काफी सारी put writing हो रखी है, which is an indication that 25,300 could be the near term
support area for Nifty. And if you look at the overall option chain, 25,000 broadly speaking एक आपका सपोर्ट बनता है, जो हम लोगों ने अभी बात भी किया था from a technical standpoint. 25,000 being a whole number has a triple bottom support trend line, giving it a support, जहां पर दो बार और पिछले 4-5 दिनों के सेशंस में मार्केट ने सपोर्ट लिया है. तो that trend line is intact. 200 DMA is also around 25,000. So 25,000 is a very, very crucial support area for Nifty. मेरे ख्याल से तो it is a make or break kind of a thing. कि अगर 25,000 टूटता है, we have seen on the chart, it is an empty space. नीचे की तरफ technically speaking कोई भी और support नहीं दिख रहा है. तो नियरेस्ट सपोर्ट इज एट गैप एरिया अराउंड 23,000 लेवल्स. राउंड फिगर्स की बात करते हैं, याद रहेगा. ठीक है, तो अगर 25,000 टूटता है, कोई भी सपोर्ट नहीं है 2,000 पॉइंट नीचे तक. सो विच इज अ वेरी स्केरी सिनारियो. सो लेट अस होप एंड प्रे कि 25,000 जो है वो टिका रहे. डेटा पॉइंट क्या बोलता है? 25,000 पे सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है. तो दैट इज वन सपोर्टिंग फैक्टर. ये अच्छी बात है. एंड यू विल ऑल्सो नोटिस काफी सारा पुट. You have supports at every level. You have support at every level between 25,000 से लेके 25,400 तक और 300 तक. Okay, between 25,000 and 25,300 you have decent amount of support building up. तो मार्केट एक नया बेस बनाने की कोशिश कर रहा है. मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ट्राइंग टू डिफेंड द 25,000 levels. So let us hope and pray that this level is defended. This is our first inference. The nearest resistance is 25,500. Okay, which is natural कि भाई नियरेस्ट होल नंबर पे सबसे ज्यादा आपको कॉल राइटिंग दिखेगी. ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग, इफ यू आर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, फॉर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, ओके, 25,000 से लेके 25,500 इज द रेंज. आर वी क्लियर? Right, because visually speaking this is the data. Okay, so OI data shows 25,000 से लेके 25,500 as support and resistance. Price action also shows 25,000 से लेके 25,500 as the range. So our range identification is fairly simple, fairly clean. Yes or no? That we are in the range of 25,000 and 25,300. Now which side the market will turn remains to be seen. Correct? 25,000 से हम लोग को बेस बना के ऊपर की तरफ गया है. 25,500 के आसपास हमको रेसिस्टेंस मिलने की उम्मीद है. तो अब since we have the budget coming up in a few days, swing या positional trades लेना खतरे से खाली नहीं होगा. Taking a very strong position can offer you very strong, very big risk or very big reward also. ठीक है, as retail traders हम लोगों को outsized रिस्क लेना नहीं चाहिए. ठीक है, सो प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, अगर मार्केट 25,000 के आसपास आता है, इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्ट ऑन दैट सपोर्ट. एंड अगर 25,500 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, ठीक है, विच इज एसेंशियली अ मीन रिवर्शन सेटअप का टारगेट, then you can consider setting up some strategies जहां पर 25,500 का रेसिस्टेंस अगर दिखे. ये हो गया अपना ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का. सो टुमारो इज आई थिंक सेंसेक्स का एक्सपायरी. करेक्ट, टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी. लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज बिल्डिंग अप इन सेंसेक्स चार्ट एज वेल.
Let me open the chart of Sensex. Okay, let us mark the opening range for Nifty as well as for Bank Nifty. All right. So what is the opening range for both Nifty and Bank Nifty? Let us first measure that as well. It is a 146 point का opening range on Nifty, which is a fairly big range. And बैंक निफ्टी में कितना है 0.36%. तो अगर आप देखें बैंक निफ्टी में 0.36% का ओपनिंग रेंज है एंड निफ्टी में 0.58% का, मतलब निफ्टी का ओपनिंग रेंज काफी बड़ा कैंडल है. तो निफ्टी में अगर आप ओआरबी ट्रेड सेटअप ढूंढोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है काफी बड़ा हो सकता है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी. ओके, सो आई मीन दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं हिंट और मेथड of deciding out of the two broad indices which one would you be more comfortable trading. Okay, चलिए अब मैं काम करता हूं. I will open the chart for, I will just duplicate this and यहां पर मैं सेंसेक्स का चार्ट खोलता हूं एंड सेंसेक्स का OI देखते हैं. Let us read the Sensex data. Let me open the chart for Sensex and let us read that. Now, Sensex data is a little more scattered with very clear support levels seen. Okay, so 82,000 and 81,500 are very clean support areas, and बाकी जो है at the current market price of 82,400 there is a smattering, मतलब puts भी हैं calls भी हैं, दोनों तरफ से एक fight चल रही है, but बहुत clearly दिख रहा है कि 82,000 seems to be a strong support area for Sensex. Let us try and open the chart for Sensex and read through this and try and collate this with price action. OI data shows that यहाँ पर Sensex में okay. So this is a very interesting chart if you look at Nifty, okay, and if you look at Sensex. What is interesting in Sensex? Can somebody tell me? What is so interesting about the Sensex chart? Open is equal to low. Correct? This is interesting. This is a sign. We have done the we have explored this in depth. This concept of open is equal to low is equal to bullish. Open is equal to high is equal to bearish. We did this in December intraday series. Okay, anybody who has attended that will recall, and if you are interested in knowing this, you can go to the playlist and you will find the open high, open low setup that we have discussed for at least an hour. Now, in Sensex, we notice while there is a rejection also at 82,400, okay, we can very clearly see that open is equal to low is being formed here. And what is the level that we can notice? The level that we are seeing on Sensex is 81,900. So can I say
that 82,000 price action is also a support. Okay, 82,000 put OI is also a support. This could be our inference from the data that we have seen. So I have a question. Let me read through that. Good morning. And if someone is looking for I didn't get the question, Jispalji, but as we are reading the chart of Sensex and tomorrow is the Sensex expiry, what we can notice is, at least for the time being, which is around 20-21 minutes since open, Sensex has formed what is known as a bullish candle, or at least it looks like it is in the process of forming a bullish candle called open is equal to low. This kind of a setup, if it sustains, is a sign of bullishness in that price action, bullishness in the chart. And if I were to, collate this along with open interest data, where very clearly 82,000 levels put open interest is the highest, is the tallest amongst all of them. So, if you were to add both of the data, you will notice that, or you will infer that 82,000 is likely to be defended for this expiry. Okay. However, open is equal to low is a developing story. It's a live candle. It can completely give up and turn on the downside. So we will have to wait for some more time to kind of have a clarity. Yes, भरोसा होना चाहिए इस पे कि भाई थोड़ा और समय तक ये टिक जाए, थोड़ा बुलिशनेस दिखे, प्रॉफिट बुकिंग ना आए, तो हम लोगों के लिए ये बेटर इंडिकेशन होगा. So right now we are in the midst of the opening range, 82,500 and 81,900. ये एक आज का रेंज बनता हुआ दिख रहा है बाजार का, and we are absolutely in the center of the range. ठीक है. So anybody who is looking to trade intraday only, ठीक है, one can simply look at trading such kind of setups. One can consider looking at trading such kind of setups through a non-directional bias, simply because intraday में you can see that there is a floor which is 81,900 and there is a ceiling which is 82,500 for the time being, and the kind of price action it is trying to do on the intraday time frame is this, right? It has given a strong bullish outflow, and after the second 5-minute candle it is now in the middle of it. Okay. Combine this with price action reading, you will notice that while the prices, मतलब प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं, पुट वाई और भी बिल्ड हो रहा है, राइट? इफ यू नोटिस दिस, correct? If you notice, put y is actually increasing rather than decreasing. मतलब market participants are trying to defend supports. Okay, they are trying to defend supports. It remains to be seen what kind of price action it happens, right? But अगर आप clearly देखें, data को read करें, it very clearly says that 82,000 is the support, and around the current market price you can find more puts as well as compared to calls. Okay, so the bias in this kind of a setup is very clearly on the upside because of the facts that we have noticed. Open is equal to low, put open interest highest at around the opening level of the price, and put open interest is getting built up even in the intraday series, right? So there is a strong chance that we could eventually, I mean, the data says that this price action should be bullish for the day. Okay, this is the kind of price action that I am reading. So we have another 5 minutes before we close the day.
All right. Let us see if I have any important questions that I can take some time out and answer. So there are some questions on individual stocks. It would be a little difficult for me to give a analysis on individual stocks because that may be construed as buy or sell recommendations. But rather than giving you any levels or anything, I will just have a broad view of the technical patterns. So there is this request on comments. Okay, so if you notice in comments, purely from a technical price action perspective, comments is okay. Let me just show you this. Comments is essentially taking support in the levels of 3800, 33 and 3900. So between 38 and 3900 Cummins एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है. ठीक है, ब्रॉड ट्रेंड ऊपर है, there is no doubt about it, but it has also given a strong sell off. Sorry, I missed my chart. Okay, so there has been a very strong sell off around these levels, but which is 4600, and in this range, if I were to consider 38 and 3900 as the floor from a price action perspective, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन बनाया है, ठीक है. So if this is the floor, the ceiling happens to be 4600. All right, and there are these levels of prior supports which have been broken. Correct. Now the stock is consolidating. It is consolidating in a nearby range of 4100 and 3800. तो ये 300 पॉइंट के रेंज में कमिंस ट्रेड कर रहा है. लेट अस लुक एट द टेक्निकल सेटअप फ्रॉम ओके. सो अगर आप यहाँ पर देखें, what do I notice? I notice early signs of what would this be? जिसने कमेंट्स के बारे में पूछा, क्या ये बता सकते हैं यहाँ पर क्या नोटिस किया है? Early signs of positive RSI divergence. ठीक है, पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस आफ्टर अ फॉल कंसोलिडेशन है. ठीक है, एंड अगर आज भी आप कमेंट्स देखें, ओपन इज इक्वल टू लो. करेक्ट. So would I trade comments in this setup? It is not all that clean. For me, how would I trade this is, I would trade a range breakout. I will trade only on confirmation. Are we clear? How is the confirmation visible? What is the confirmation that I am going to see? This is my consolidation range. Once I get a clean breakout out of this consolidation range, right, I will then have a clarity कि भाई इसमें क्या स्टॉप लॉस रखना है और किस तरह का ट्रेड कर सकता हूँ. Clear? This is the read on a stock. Again, I have not tried to give any recommendation. I hope that is very clear with everybody. यहाँ पे stock recommendations नहीं दे रहे हैं, but price action को simple तरीके से किस तरह से रीड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारा क्या एक व्यू बन सकता है वो देख रहे हैं. ठीक है. कमेंट्स का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट भी आज देखूं तो शायद इसमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सीरीज. So there might not be too much of data that is getting collated. All right, friends. So it is 9:45. I will take your break here. Okay. And before I leave, I am interested in knowing what is happening with Sensex because that I believe is the
chart of focus because of the expiry coming up tomorrow. So it is showing little bit of intraday weakness. तो हाई बनाया है, लो बनाया है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रेंज समझ लेते हैं. Okay, and right. Single color, use one color. Okay, so what I have done is basically created a simple tool to identify the range, ताकि हमारे जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर दोस्त हैं वो इस रेंज को आइडेंटिफाई कर सकें. करेक्ट. ये फिबोनाची टूल पे क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो रहने वाला है, यू कैन सिंपली पॉज एंड लर्न हाउ इट इज डन एंड देन यू कैन सिंपली गो टू दिस सेटिंग्स एंड यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं. ओके, ये अभी आपका डिफॉल्ट हो जाता है. नाउ इफ द मार्केट हवर्स अराउंड दिस प्राइस, ठीक है, तो ये एक अच्छा नॉन डायरेक्शनल सेटअप बनता है फॉर द इंट्राडे रेंज. दूसरा तरीका होता है इज एक्टिवेट द एफ एंड ओ चार्ट सेंसेक्स का. ओके, एफ एंड ओ चार्ट एक्टिवेट करें एंड इसमें हम इंडिकेटर डालें वीवैप का. ओके, ये इंट्राडे का ये हम लोगों ने डाल दिया वीवैप का चार्ट, वीवैप का line. Okay, so now if the price is going to be around the VWAP levels, if the price remains around the VWAP levels, we will then consider setting up a non-directional trade because we have identified a range. So there are multiple ways of trading a particular set piece. हमको बस ये समझना है कि किस तरह से हमको ये ट्रेड करना है. All right, friends. So I'll take your leave now, and I will see you tomorrow at 8:45 sharp. I hope the session was enjoyable. Do let me know, let us know in the comment section what more do you want to understand and learn, and keep a track of in this daily live market analysis, and we will be happy to bring those in front of you. Till then, take care. Bye bye. See you tomorrow.